Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back in the Learning with Samina, and today we have class number 4, which is very important because earlier we have already done present perfect, present continuous, simple present, and now we are going to combine everything, specifically perfect and continuous. Perfect may you knew that what you have to use, and continuous may you also knew what you have to use. Now in this one we are going to combine both of them. How? Let's go through that. For example, in continuous, you are asked to describe something which is happening right now while I'm speaking, right? And in perfect, you have to describe something that's happening in the past and just done now in the past as well. Now, in the perfect continuous, you have to combine both of them. Perfect means it was happening in the past. Now, when we're going to combine it with the continuous, so that is something which is still happening. So, something which was happening from the past till now is called perfect continuous. It's not done. Obviously perfect होता तो it was happening in the past और अब भी वो खत्म हो चुका है, but continuous शामिल हो चुका है, so that means it's still happening. So for example से start करते हैं, लेकिन सबसे पहले break through करते हैं. सबसे पहले we have affirmative. Okay, affirmative is positive sentence as you all know. हम करते हैं इसका structure discuss करते हैं. Structure is subject plus has slash have plus been plus ing plus object. So you have to use first form of verb. Now let's break through it. जब भी मैं ऐसी किसी बात का मेंशन करूंगी, जैसे मैंने कहना हो कि मैं पिछले 3 घंटों से सो रही हूँ, ऑब्वियसली नॉट द रियलिटी, बट चलिए हम बात करते हैं, इसका सेंटेंस बनाते हैं. आई हैव बिन स्लीपिंग फ्रॉम 3 hours. Okay, I have been sleeping since 8 p.m. Okay, obviously not the reality, because if you are not sleeping, if you are up, then you're gonna say this, but still I have been up since 3 p.m. I have been up for 3 hours now, and अभी तक आप जाग रहे हैं, when you're gonna say it. मैं पिछले 3 घंटों से पढ़ाई कर रही हूँ. I have been studying for 3 hours. I have been studying since 3 hours. I have been studying from last 3 hours. So you are telling something that this was something I started in the past and still happening now. So that means perfect continuous sentence. I'm going to give you one last example before we go to the next one. वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही है सुबह से. शी हैज़ बिन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग. सो यहाँ पे सिर्फ आपने एक चीज का ध्यान रखना है, शी के साथ हैज यूज होना है, आई के साथ हैव यूज होना है. ओके, सो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो अभी तक आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग विद व्हाट, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिख दूंगी फॉर दोज पीपल हु हैव मिस्ड इट. नाउ आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड द काइंड ऑफ मेथड एंड स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. अब नेगेटिव पे जंप करते हैं. नेगेटिव में सिर्फ एक चीज है कि आपने नॉट लगा देना है. Subject plus has slash have, not plus been plus ing plus object. Just that. वो सुबह से अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही. She has not been working on her project since morning. Okay? She has not been working on her project since morning. वो 1 घंटे से अपनी बस का वेट नहीं कर रहे. They have not been waiting for the bus for an hour. Okay? तो हमने बस ये करना है कि not लगा देना है with whatever the sentence we have been using. Have not, has not, और सिर्फ वो changes हैं and it's gonna make your negative sentence. Okay, that is the only difference. But बाकी rules सब same हैं. You have to talk about something which has not been happening since past. Okay, I have been eating eggs in my breakfast since childhood. That is a truth. तो कोई भी ऐसा truth आपका जो अभी तक आप कर रहे हैं, सिंस है आपका अभी तक वो प्रेजेंट है, तो उसमें आपने ये फॉर्मूला लगाना है. जैसे कि मैं इस शहर में रह रही हूँ बचपन से. I have been living in this city since childhood. Okay? I think you all understood. बहुत सिंपल से रूल्स हैं. मैं ज़्यादा इसको मुश्किल भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुश्किल है ही नहीं. ये सिर्फ वो बातें हैं जो पास से लेके अभी तक हो रहा है. बहुत सी ऐसी चीजें हैं. मैं बचपन से लेके अभी तक पढ़ रही हूँ, बिकॉज पढ़ाई आपका पीछा नहीं छोड़ती है. I have been studying since childhood. I have been studying since childhood. Now let's make it to interrogative, which is a question form. सिर्फ वो रूल है, has और have शुरू में आ जाएगा, फिर आएगा subject, then been, then ing, then object. For example, क्या मैं 3 घंटों से पढ़ रही हूँ? Have I been studying for 3 hours? क्या तुम पिछले 3 घंटों से पढ़ रही हो? Have you been studying for 3 hours? क्या वो अपने प्रोजेक्ट पे सुबह से काम कर रही है? Has she been working on her project since morning? Just like that, you're gonna know everything, and it's as simple as that. I hope you learned something, and I am trying to make it simple. Okay? अब आपने इसी तरह simply इसको सीखना है, and you have to remember it. Let me know what you want to learn next, and
स्टे ट्यून्ड. ऑब्वियसली मैं इनकी नोट्स भी आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह. अंटिल देन आप ये वीडियोस देखें और अच्छे से इनको ध्यान दें और मुझे कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना कर दिखाएं, तो आई विल चेक इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस. अल्लाह हाफिज गाइस.